Good morning, everyone. I am Rohit Gupta. I am working as assistant professor at St. Andrews Institute of Technology. Today, I will discuss subject numerical methods, probability, and statistics. Today, I will discuss introduction of numerical methods, bisection method, why we are using numerical methods that we are discussed today first. Numerical methods. Why we require numerical methods? Sometimes when we are not able to find solution of any equations by analytic method, then we are find solution of any equations by numerical methods. Numerical methods is an approximation method. It's not an exact method. Okay. Solution. There are two type of equations. One is algebraic equation and another is transcendental equations. Methods to finding roots of equation, different methods are there. First method, bisection method. Another method, Newton-Raphson method. Another method, regular falsy method. Then another one is second method. There are four methods. First, bisection. Next, second one, Newton-Raphson. Third one, regular falsy. And fourth one, regular second method for finding the root of equation. For integration, there are three type of methods. First, trapezoidal method. When we are not able to find integration by simple method, I will show you in next slide. Integration of function means trapezoidal method, Simpson 1/3 and Simpson 3/8 are there. If we are not able to find differential of any equations by analytic method, then then we find by numerical method. There are three type of method: Euler method, forward method, Euler forward, Euler backward, and Runge-Kutta methods. Mathematical methods are two types. First one is analytic method and another one is numerical method. Then we will discuss first what is analytic method. If any equation like that, x square minus 5x plus 6 equal to 0. If we find the root of this equation, then simply we can see by Dharacharya formula that x equal to minus b plus minus रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मींस आप इसका सिंपली रूट निकालते हो या तो आप फ्रैक्शन करके निकालते हो, फ्रैक्शन करके निकालोगे तो इसको लिखोगे 3x minus 3x minus 2x then x minus 3 and x minus 2 equal to 0 तो x equal to 3 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा. या तो दूसरा मेथड धराचार्य फार्मूला से निकालोगे, दैट मींस उसके रूट का फार्मूला क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट इज x equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. This is a simple case. If we are not able to find any root of equation by this method, then we find root of equation by numerical method. Okay, this method, finding root of this method is called analytic method. Understood? Okay, there are two roots. First one is 3 and another one is 2. Okay, as you if some equations are there, if x square minus 5 tan x plus 6 like that, this is the equation, then how can you find the root of this equation? Then you find the root of this equation by analytic method. Okay, next, if there is an integral that is 1 to 2 x into dx using analytic method, means first you integrate this, then put the limit, then x का integration क्या होगा, x square by 2, 1 से 2 will पहले put करें 3 by 2 हो गया. When we are not able to find integral of any functions by this method, then we find by numerical method. There are three types of method. That is, first one is trapezoidal, another one is Simpson 1/3, next one is Simpson 3/8 rule. But the drawback of analytic method is it is not applicable for higher degree equations and also not applicable for non-linear equation. Drawback of analytic function, it is not applicable for higher degree and for non-linear equations. To overcome this, we use numerical methods. Numerical methods provides approximate value. It's not an exact value. Okay. Now, first we will discuss what is 0. If there is a number, something like xi, for which f of xi is equals to 0. If there is a number xi
मींस कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो अल्फा या जाई for which f of j equal to 0, then this is a card, it is a card, it is called a zero or root of this function f of x. जैसे हमने लिखा, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ये एक्स वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज योर फंक्शन. अगर मैंने ये फंक्शन ड्रा किया, अगर ये फंक्शन एक्स एक्सेस को कट करेगा, मींस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो. अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, दैट मींस दिस पॉइंट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, root of this equation, then this equation is the root of this equation or zero of this equation. Understood? Means किसको कंट करें, graphically we can say that if any function cut the x-axis at any point j, then j is a root of this equation. Understood? Now we root, take another value, simple root. A number j is a simple root of f of x equal to 0. कोई नंबर जाई, कोई भी नंबर है जाई, एक सिंपल रूट होगा f of x equal to 0. Means this is the equation. If f of j equal to 0 and f dash of j does not equal to 0, we also write that f of x equal to x minus j into g of x. But g of j does not equal 0. In graphical representation, there is a graph, that is, this is a function f of x, which I draw this line. This is the cut x-axis at once. So this is a simple root at j. What is multiple root? There are more than one roots. If there is only one root, then this is called simple root. If there is more than one roots, this is called multiple root. F of x equal to x minus j1, x minus j2, x minus j3 into g of x. I mean, there are three. This is the function. If I draw graphically, this function I will draw, then this is cut the x-axis at 3 points. First one is j1, another one is j2, and next one is j3. Simple roots are such types, means if I'm having an equation like that key x square minus x minus x square, x minus 2 ka whole square, it's not a simple root, because f of j is equals to 0, but f dash j is also 0. Means if any equation can be right in this form, means f of j equal to 0, but f dash j does not equal, means there is only one root. In multiple root, there may more than one root, may be same or different. Okay. Now, first one, we understood a concept, that is intermediate mean value theorem. If f of x is a continuous function, if f of x is a continuous function defined on AB, on any function on any interval AB, f of A and f of B having opposite signs. If any functions have opposite sign on any interval, in such case there exists at least one root or f of x in AB. जैसे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया f of x का, एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये मैंने a लिया, f of a लिया, b लिया, f of b लिया, means both are opposite sign. If I multiplied f of a into f of b, both are in, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, y f of x पॉजिटिव है b पे, that means both are in opposite sign. There exists at least one root like this one. This is the root where f of x is equal to 0. Then how can I find f of, this is the root where f of x equals to 0. Okay, let me example, f of x equal to x cube minus 4x minus 9 in 2 3. Okay, f of 2, as we have taken, f of 2 की वैल्यू क्या होगी, 2x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 क्यूब minus 4 into 2 minus 9, तो वैल्यू क्या आ गया, -9. -9 is a negative. Then f of 3 equals to 3 cube minus 4 into 3 minus 9, that is 6, equals to 6, positive. F of 2 is negative, f of 3 is positive. So there exists at least one root in 2 3. There exists at least one root in 2 3. Means what is intermediate value theory? Theorem simple. If any f of x is a continuous function on any interval AB, and f of a into f of a and f of b having opposite sign, then that case there exists at least one root
on which at least one root in AB. That's it. This is used in bisection method. Okay, bisection method. This method is based on repeated application of intermediate value theorem. Bisection method is a particular case of intermediate value theorem. Suppose a root of f of x equal to 0 lies in interval AB, that is f of a into f of b is negative. That means either f of a is positive or b is positive. One of them is negative. Then that's why na, f of a into f of b negative. We bisect the interval. If I've taken this is a function, this is y, if bisect it, then at a into b, then we have taken an intermediate point x1 that is equals to a plus b by 2. Then root lies in the interval a to b. The root lies in the interval. We bisect the interval x1 equals to a plus b. Then root lies in the interval. If a f of a into f of x1 is negative, then किस रूट पे इंटरवल पे रूट लाई करेगा a और x1 पे. If f of x1 into b f of b is negative, then root लाई करेगा x1 और b पे. Understood है? अरे जिसके if I have found x1, तो हम चेक करेंगे f of x1. f of x1 नेगेटिव है और f of a पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा. मींस क्या है कि दो का प्रोडक्ट f of a into f of x1. If it is negative, then root lie between a and x1. If f of a into f of x1 is positive and f of b into f of x1 is negative, then root lie between x1 and b. This repeats n times. This process repeats n times. Let n is a required number of iterations. In some questions, they have given this is your find the root of this equation, something f of x in at 3 iterations. In some questions, the examiner said that let n is required number of iterations. After the n iteration, we have b minus a upon 2 to power n is less or equal to epsilon. Means when we are doing n times of iterations, this is epsilon. Taking logarithms, we get n greater or equals to integer value of log of b naught minus a naught minus log epsilon by log 2. If I'm having error, that is epsilon, and if I want to find number of iterations and first value and last value and error is given, then we find the value of iteration. A question of bisection method. Perform 3 iterations of the bisection method to obtain the smallest positive root of the equation x cube minus 5x plus 1 is equals to 0. First, verifying that the root lies in the interval 0, 1. First, if it is bisection method, तो पहले मुझे क्या करना होगा, a b निकालना होगा. तो a और b f of x होगा, फिर a और b लेंगे, फिर a पे चेक करेंगे वैल्यू, फिर b पे चेक करेंगे. If it is a negative f of a into f of b negative, तो फिर हम चेक करेंगे कि ये there exists a root lie between a and b. अब हम करते हैं इसको. देखना, फर्स्ट पहले क्या करेंगे, f of x equals to x cube minus 5x plus 1. सिंपल है. तो पहले हमें चेक करना था, चेक ऑन इंटरवल दैट इज रूट लाई बिटवीन दिस आर नॉट. तो पहले हम क्या करेंगे, सिंस f of 0 इक्वल्स टू, हम जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 क्यूब माइनस 5 into 0 प्लस 1. तो आंसर क्या आएगा, 1. दैट इज पॉजिटिव. एंड f of 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 5 into 1 प्लस 1 दैट इज माइनस 3. जब f of 1 निकाल तो माइनस 3 आ गया. अच्छा, अब चेक करेंगे, अब रूट चेक करते हैं. f of 0 into f of 1 यानी कि 1 पॉजिटिव एंड f of 1 कितना है, माइनस 3. दैट इज बोथ का प्रोडक्ट कितना होगा, f of 0 into f of 1 क्या होगा, नेगेटिव. दैट मींस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट, वन पॉजिटिव रूट लाई बिटवीन 0, 1. हमने 0, 1 पे वैल्यू चेक करी, a वर इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1. इफ a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू 0.5. अच्छा, देन वी अगेन चेक एट f of x1. अंडरस्टूड है.
ओके, एफ ऑफ x1 पे वैल्यू क्या गई, x1 की वैल्यू क्या है 0.5, 0.5 पुट करा तो 0.5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 1, व्हेन वी सॉल्व इट तो क्या आएगा माइनस 1.375. दिस इज योर नेगेटिव वैल्यू, अंडरस्टूड है? ओके, दिस इज योर नेगेटिव वैल्यू एंड एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है 1. इसका मतलब इन दोनों का एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0.5 इज नेगेटिव. दैट मीन्स a root lie between 0 and 0.5. मीन्स बेसिकली क्या करना है, पहले आपको ए और बी लेना है, फिर उस पर चेक करना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को. जैसे ये क्वेश्चन है, पहले आप क्या करोगे, ए और बी लिया आपने, दैट इज ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1. ओके, तो एफ ऑफ ए आपने वैल्यू निकाली, दैट इज पॉजिटिव. एफ ऑफ बी निकाली, दैट इज निकल. दोनों का मल्टीपल देखो, इफ मल्टीपल मींस एफ ऑफ 0 into एफ ऑफ 1 इज नेगेटिव, then there exists a root lie between that interval a or b. That means there exists a root lie between 0, 1. फिर मैंने क्या किया, उसका इंटरमीडिएट पॉइंट निकाला x1. फिर मैं क्या करूंगा, f of x1 निकालूंगा, फिर वैल्यू चेक करेंगे, f of x1 और f of 0 पे चेक किया, दोनों पे नेगेटिव आ गया. दैट मींस रूट लाई बिटवीन 0 and 0.5. Second iteration, that means a root lie between this one. Then we first find intermediate value, that is x2, 0 plus 0.5 by 2, that is 0.25. understood है? Okay, if I found तो f of 0.25 find करेंगे, तो f of 0.25 is equals to 0.25 का क्यूब minus 5 into 0.25 plus 1. तो आंसर क्या आएगा minus 0.2344, that is negative. तो f of 0 is equals to 1, that is positive. Means f of 0 into f of 0.25 is negative. That means क्या होगा, root lie between 0 to 0.25. Now how many iterations we are doing? There are three iterations. Then third iteration, x3 equals to 0 plus 0.25 by 2, 0.125. तो f of x3 क्या मिल जाएगा सर, f of x3 मिल जाएगा आपको f of 0.125 is equals to 0.3770. This is positive. And f of 0 पे क्या है, पॉजिटिव. मींस 0 और 0.125 पे तो लाइक नहीं करेगा. अच्छा, अब हम चेक करेंगे 0.25 पे. 0.25 पे क्या है, नेगेटिव. और f of x3 पे क्या है, पॉजिटिव. मींस किसके बीच में लाइक करेगा, 0.125 एंड 0.25. देन x4 क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.1875. दिस इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर बाइसेक्टर. इफ एनीबॉडी सेइंग 3 आइटरेशन, तो आपको कितने आइटरेशन करने हैं, थर्ड आइटरेशन, और चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा. दिस इज योर आंसर. ओके, अगेन अ थिंग, अगर हमें स्टेप वाइज लिखना, पहला स्टेप क्या होगा, f of x हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं. सेकंड स्टेप से चेक करो, f of a और f of b हैविंग अपोजिट साइन, देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज कर लो और काम हो जाएगा, जैसे हमने समझा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम हैविंग फाइंड, मींस आपको निकालना क्या है, x3 फाइंड करना बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, वेयर f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 ऑन इन द इंटरवल 2, 3. इन द इंटरवल 2, 3. तो f of 2 की वैल्यू निकाल ली, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, तो 9 माइनस 9 इज नेगेटिव. तो f of 3 निकाला पॉजिटिव, तो दोनों पे दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ रूट लाई बिटवीन 2, 3. तो x1 निकाल लिया, तो 2 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 2.5. f of 2.5 निकाला, x की जगह 2.5 वैल्यू पुट करी तो माइनस नेगेटिव आ गया. f of 2.5 नेगेटिव, f of 3 पॉजिटिव, दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 3, 5.5, 2.75. तो हमें x2 निकाल लिया, दैट इज 0.76969. तो f of 2.75 पॉजिटिव, f of 2.5 नेगेटिव, दैट मींस x3 निकाल लेंगे 2.5 और 2.75. ओके, नाउ इट्स डन. थैंक यू.